स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंस मैथ ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पीएमआई क्या है इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं पीएमआई क्या है। ठीक है, पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज पीएमआई स्टूडेंट्स? पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. It is a technique, you can say it is a technique of proving, the technique of proving a mathematical statement which is true for positive integer n. Okay, by following the algorithm given below. Okay, what is the algorithm? Algorithm क्या है? That means we have to follow the steps to prove a mathematical statement which is true for positive integer n. The first step is we have to denote the given statement by Pn और दिए गए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को Pn या Sn से डिनोट कर। स्टेप टू so that let us consider the mathematical statement is Pn. Then in the second step we have to show that Pn is true. Pn is true for n is equals to 0. That means we can say we have to prove that P1 is true. That means what P1 is true. In the third step, in this step, we have to assume that the given statement is true for n is equals to m. Assume that what Pk is true, or you can say Pn is true for n is equals to k. That means Pk is true. That means what? Pk is we have to assume in the third step that the given statement is true for n is equals to k. And finally, in the fourth step, in this step we have to show that P k plus 1 is true. Pk plus 1 is true. 2. 2 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
pk is 2। और यदि ये सभी स्टेप्स प्रूफ हो जाते हैं, दैट मीन्स यदि हम लोग किसी गिवन स्टेटमेंट को pk प्लस 1 पर 2 दिखा देते हैं इसके हेल्प से, pk के हेल्प से, है ना। थर्ड स्टेप में हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो pk के लिए ट्रू है, और इसके हेल्प से pk प्लस 1 यदि प्रूफ हो जाता है कि वो भी ट्रू है, तो हम कह सकते हैं कि pn is true। So we can say pn is true, hence we conclude that pn, the mathematical statement pn is true for and belongs to positive integers, okay, by the concept of pn, by the principle of pn। ठीक है, फिर से समझते हैं ये क्या है। किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू है, ठीक है, तो ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग इस कॉन्सेप्ट से प्रूव करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो pn है या sn है, बट दैट मीन्स यू हैव टू denote the statement, consider the statement by pn or sn where n denotes the number of terms, and in the second step we have to show that the given statement pn is true for n is equals to 1, okay, that means you can say p1 is true। In the third step it is the assumption step where we have to assume the given statement is true for n is equals to k, that is pk is true। And the final step, in the fourth step, we have to show that pk plus 1 is true whenever pk is true, ठीक है। और यदि फोर्थ स्टेप प्रूफ हो जाता है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट pn था वो क्या है, वो एक ट्रू स्टेटमेंट है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द कांसेप्ट ऑफ, बाय द प्रिंसिपल ऑफ pn, ठीक है। तो इस स्टेप में ये जो स्टेप हमारा है, फर्स्ट स्टेप वेयर वी शो p1 is true, दिस स्टेप इज कॉल्ड द बेसिक स्टेप। इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द बेसिक स्टेप। ये जो स्टेप है हमारा, इट इज कॉल्ड द बेसिक स्टेप, ठीक है। और ये जो हमारा स्टेप 4 है, दिस स्टेप इज कॉल्ड इंडक्टिव स्टेप। What? Inductive। इसे हम लोग इंडक्टिव स्टेप कर सकते हैं। ये जो हमारा स्टेप है इसे एजम्पशन स्टेप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एज्यूम कर लेते हैं कि वो n is equals to k के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरह से किसी क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। 1 plus 2 plus 3 dot 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 plus n is equals to n into n plus 1 by 2. You know it is a formula of first sum of first and next numbers. इसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोगों ने pn डिनोट कर दिया, इट इज आवर स्टेप 1, ठीक है। एट लीस्ट स्टेप 2 वी हैव टू सॉर्ट दैट दिस टू फॉर n is equals to 1. So for n is equals to 1, p1, what is p1 mean? p1 means what? The first term 1, okay, and which is equals to, you can say in the right hand side 1 into 1 plus 1 upon 2, okay, these two are equal because 1 plus 1 is 2, 2 divided 2 is 1, 1 into 1 is 1, so 1 is equals to 1, that means for n is equals to 1, p1 is 2. We can say therefore p1 is true, p1 is, ठीक है।
यहाँ n इज इक्वल्स टू 1 के लिए P1 true है। स्टेप 3, in this step we have to assume that P is true for n is equals to, that means let Pk is true. Pk is true means what? That means what? 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus k is equals to k into k plus 1 divided by, let us consider it। ठीक है, हमने यहाँ एज्यूम किया है कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो पी के लिए ट्रू। नाउ इन द फाइनल स्टेप, स्टेप 4, वी हैव टू सॉ दैट इन दिस स्टेप, नाउ वी हैव टू सॉ दैट pk plus 1 is, that means what we have to show here? That means we have to show that pk plus 1 is 1 plus 2 plus 3 dot 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 plus n plus n, हम लोग के लिए चल रहा है, वहाँ पे क्या आएंगे as k plus, which is equals to what? K plus 1 and here k plus 1 plus 1 and whole divided. So we have to solve this. So let us take the left part, LHS. What is LHS? The left hand side is 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus k plus k plus। फ्रेंड, ये जो 1 से k तक है, इसे हम लोग फर्स्ट के हेल्प से क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ 1 to k टर्म्स इज व्हाट? k into k plus 1 divided by 2, and it is what? It is k plus, ठीक है, by using फर्स्ट। ठीक है, यहां से हम लोग k plus 1 को कॉमन कर लें, तो k plus 1 common, we have the first term k by 2, okay, and the second term plus। इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं k plus 1, ये कितना हो जाएगा? k plus 2 whole divided by, this can be written as k plus 1 k plus 1 into k plus 1 plus 1 divided by 2, which is our RHS। ये हमारा क्या है? It is our RHS। ठीक है, so we can say by PMI concept this mathematical statement is true। okay, so by PMI, principle of mathematical induction, Pn is true, for n belongs to all continuity। ये है हमारा PMI, जहां हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, इसी बेस पर आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे के वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो